Children, let us continue with the last topic of the chapter, how do organisms reproduce? Now we come to the last topic, that is the reproductive health. We have discussed this topic in online class, but as most of you have connectivity problem in that class, so I'm just repeating this topic. Now reproductive health means proper functioning of the reproductive organs, but it also affects mental health also. Now in this as we see that reproduction, and that is a result of fusion of male and female gametes, sexual reproduction, and we have seen in the reproductive organs that male gametes, that is produced by the testes, female gametes produced by the ovaries, they fuse at the fallopian tubes. In the fallopian tubes they fuse, and then implantation or development of the fetus that occur in the uterus. So ये हमने last time किया था बेटा, and फिर हमने किया था कि for this purpose the inner lining of the uterine wall, it becomes thick and thick, thicker and thicker होती जाती है, and if there is no fertilization of the egg fertilized नहीं होता, then this thick membrane and breaks, and it comes out through the vagina as blood and mucus, and this is known as the menstruation. So the main thing is we see that here there is a fusion of gametes, and here there is a implantation occur. तो ये wall थिक होती जाती है. अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेबी डेवलप होना है, तो ये वॉल थिक रहती है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फ्यूजन नहीं होती, देन दिस वॉल ब्रेक्स. सो ये कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम कर लिया था. सो this placenta is a tissue that provides nutrition, oxygen, and to the fetus from the mother, and it also removes waste and carbon dioxide from the fetus. Now main हमारा है अब कि in the reproductive health it is necessary to prevent unwanted pregnancies, and the methods which are used to avoid pregnancies, they are known as contraceptives. So different types of contraceptive, different methods are natural method, barrier method, chemical method, surgical method. In the natural method, no artificial device is used. As you know that one egg is produced once in a month by each ovary. एक ओवरी एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है. सेकेंड मंथ में दूसरी ओवरी प्रोड्यूस करती है. When there is only one egg and it is produced usually in the mid of the cycle, almost on the 14th day, and it remain live for 2 to 5 days. So if this time it fuses with the sperm, within these days it fuses with the sperm, or sperm enters during this duration, pregnancy will occur. But if entry of sperm is prevented during these days, when ovulation occurs, egg is released from the ovary, then no pregnancy can occur. So that is a natural method. So we consider that at initial days they are safe period, that is before ovulation, and after ovulation when the egg is not live, again that is a safe period. So where pregnancy cannot occur. So this is a natural method, but again it is you can say a not very reliable, riskier method. Then barrier method. Here some physical devices such as condoms, diaphragms, loops, etc. They are used to prevent the entry of sperm into the female genital tract.
So this barrier method, they can be, and they are both for males and the females. So some are used by the males and some are for the females. IUCD, like copper D, intrauterine in contraceptive devices, that is a IUCD. The copper T, that is safely placed inside the uterus of the female, and it releases copper ion in which suppress the mobility of the sperm. It also decreases fertilizing capacity of the sperm and help to prevent the fusion of sperm and the egg. So the basic principle behind the contraceptive is to avoid pregnancy, to prevent fusion, is कि हमने उन दोनों की मीटिंग को, फ्यूजन को रोकना है. तो या तो हम स्पर्म की एंट्री को रोक देंगे या फिर हम एग के रिलीज को रोकेंगे. तो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रिंसिपल यही है, ठीक है, प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. सो किसी भी तरह से either we stop the entry of sperm or we stop the release of the egg. Then chemical method. Certain chemicals, oral pills, injections, they are used as a contraceptive devices. Actually, these chemicals, they contain hormones, estrogen, etc. So they change the hormonal balance of the body and they affect the process of ovulation, release of ovum and fertilization. Then and surgical method. दिस इज यूजली अ टर्मिनल मेथड यूज्ड. तो ये एंड में यूज करते हैं व्हेन द कपल डू नॉट वांट एनी चाइल्ड फर्दर, व्हेन couple thinks that the family is complete और उसको no more child is needed by the family. तो फिर ये terminal method is suggested, that is the surgical method. In this method, it is again used for both males as well as the females. In the males, it is known as the vasectomy, and in the females, it is known as the tubectomy. Here you see in the male reproductive system that this is the vas deferens duct. It is coming out of the testes. तो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, दिस a portion of the vas deferens is cut and tied. This prevents the transport of sperms. तो sperms आगे नहीं ejaculate होंगे, तो pregnancy cannot occur. So this method is known as vasectomy, क्योंकि vas deferens जो है वो जो है टाइट की जाती है. इसी तरह फीमेल में हम इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. इन द ट्यूबेक्टोमी ये जो है फैलोपियन ट्यूब इसलिए कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट हियर सो दैट द ओवम विच इज रिलीज्ड बाय द ओवरी जो है इज नॉट ट्रांसपोर्टेड फर्दर. So the basic principle is same. Either we stop the transport of sperm or we stop the transport of ovum or the egg to avoid pregnancy. So this surgical method, it is very reliable and हम ideal contraceptive उसी को मानते हैं which is रिलायबल, जिसमें रिस्क नहीं हो और जिसमें यूज़र फ्रेंडली हो एंड इजी टू यूज़ हो, चीप हो, इजीली अवेलेबल हो. तो ये जो मेथड है सिर्फ इसमें क्या है कि पुअर रिवर्सिबिलिटी इज़ देयर, कि बाई चांस अगर पेरेंट्स को दोबारा अगर उनको लगता है कि फैमिली जो है एक्सटेंड करनी है तो इसकी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. Otherwise, this is a very good method of ideal method of contraception. Vasectomy in males and tubectomy in the females. So this is about your chapter
Yes, one more thing, in many diseases they are also spread through the sexual intercourse. तो बहुत सारी diseases जैसे एड्स जो है that also spread through the sexual contact. तो कुछ contraceptive ऐसे होते हैं जैसे हमने किया था बैरियर मेथड में, कंडोम etc. they also prevent from the respiratory tract infections also. So here there are the few terminologies is HIV, that is the name of the virus that causes AIDS, human immunodeficiency virus, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, क्योंकि एड्स के बारे में आपने सुना होगा, और एक्वायर्ड क्योंकि ये लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होती है. इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम बिकम द डेफिशिएंट, इट इज कॉल्ड सिंड्रोम बिकॉज अ नंबर ऑफ सिम्टम्स आर प्रोड्यूस, इसलिए उसको हम सिंड्रोम कहते हैं. कोई एक सिम्टम नहीं होता क्योंकि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है. तो कोई भी डिसीज होगी, छोटा सा कॉमन कोल्ड भी होगा तो वो भी बिना मेडिसिन के हमारे अपने आप इम्यून सिस्टम से ठीक नहीं होता. तो इसलिए बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. Then IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इज जैसे कॉपर टी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI. Then ARSH, adolescence, reproductive and sexual health. So these are the important abbreviation and जिसकी expansion में आपको बताइए. So this completes your chapter of how do organism reproduce. तो इसमें आपने डायग्राम बनाना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेलेबल डायग्राम इन योर नोटबुक, एज वेल एज प्लांट्स में जो हमने किया था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन द पिस्टल, वो तीनों डायग्राम्स आपने बनाने हैं. बिसाइड्स दिस इज वो जो आपने बना चुके हैं एक सेक्सुअल की टाइप्स. सो हो सकता है आपने बना भी लिए हों, अगर नहीं बनाए हैं तो अगेन टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपने नोटबुक्स में ड्रॉ करने हैं. थैंक यू सो मच.